Hello everyone. In this question, there is a loop which is placed in the xy plane, and there is a magnetic field in the z direction, and the magnetic field varies with the y coordinate and also varies with time, like this, right? So it is given that the EMF induced in the loop is always zero. Always zero matlab it is zero for all time instants. So we have to find the length of the loop. So it is a rectangular shaped loop, right? So I've drawn the diagram looking from the top. So magnetic field is in the direction perpendicular to the plane and coming out of the plane, which is the z direction plus z direction. And we have a rectangular loop whose length is shown in the y direction. तो ये जो y direction वाली dimension है उसको length बोला जा रहा है, उसको L बोला जा रहा है. और जो x direction वाली dimension है वो मैटर ही नहीं करती है, मतलब ना ही वो गिवन है और ना ही पूछी जा रही है. तो ऐसा लग रहा है कि इवेंचुअली इट विल नॉट मैटर in the question, right? So let us find the EMF. Let us try to write the EMF induced in the loop and then see whether we can put it to zero for all time instants and find the length. So first we have to find the flux through the loop. So the flux through the loop will be found by integration, because at different points inside the loop the magnetic field is different, because magnetic field is varying with the y coordinate. So the flux through the loop is an integral of magnetic field times the area of this element. So I have taken elements parallel to the x-axis, because in सारे points का y coordinate same होगा, right? So for these points I can write the flux by writing the magnetic field at these points, क्योंकि सबका y coordinate same है. So I'm suppose that this element lies at certain y coordinate y, and the thickness is dy. Then the magnetic field will be this, and the area will be a times dy, where a is the height, you can say, the dimension in the x direction. So the integral can be found between the coordinates y0 and y0 plus L. So I'm just assuming that the loop lies between coordinates y0 and y0 plus L. Again, the coordinate y0 will not matter eventually, but it is always a good practice when you're practicing these questions from book to do it properly, to write all the things properly, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा जा सकता था and it might have depended on y0. So we find the integral. So I think you all know the integral of sine of the sine function. So here time can be considered a constant because we are integrating over y. So you can consider that we are integrating at a particular time instant. The time abhi ruka hua hai. So we are looking at a snapshot. We are looking at a instantaneous photograph of the loop. और इस इंस्टेंट पे टाइम t है कुछ, तो टाइम t को कांस्टेंट मान सकते हैं. ओनली y इज वेरिएबल, ओनली y इज द वेरिंग क्वांटिटी इन दिस इंटीग्रल. सो ओमेगा t इज जस्ट अ कांस्टेंट. तो आई थिंक यू ऑल नो इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ऑफ दिस टाइप, साइन ऑफ अ फंक्शन ऑफ y वेयर y के पीछे एक कोफिशिएंट भी है और y के आगे एक कांस्टेंट भी है एडिशन में. So the constant gets the whole thing gets divided by that constant in front of y, by that coefficient in terms of in front of y. So k comes in the denominator and sin की जगह cos हो जाएगा, minus cos हो जाएगा. So I have put that negative sign outside. So we have found the flux. Then the induced EMF in the loop will be d phi by dt. I'm just talking about the magnitude here. We are not concerned about the direction. So the expression that we have just found, we have to integrate it. We have to differentiate it now, right? So we take the derivative of this whole function. So पहले वाला part जो है उस cos of anything, again just like we have integrated, again differentiation में वो जो k है, now we are differentiating in terms of t with respect to t. So now the variable is t. तो अभी ऐसा हो गया कि ये फ्लक्स जो है ये किसी टाइम इंस्टेंट पे ये टोटल फ्लक्स है, राइट, थ्रू द लूप. नाउ द वेरिएबल y हैज़ डिसअपियर्ड बिकॉज वी हैव इंटीग्रेटेड ओवर द एंटायर लूप. सो द वेरिएबल नाउ बिकम्स टाइम. तो अब किसी टाइम इंस्टेंट पे मैंने फ्लक्स निकाल लिया और जनरल टाइम इंस्टेंट t था वो, तो
जब मैं डेरिवेटिव लूँगा विद रिस्पेक्ट टू t, so now t is the variable. So I take the derivative of this cos part, so I get sine of something, sine of this whole thing. And now there is a coefficient in terms of in front of t, which is minus omega, so that minus omega gets multiplied in front. And there is another negative sign which comes from the differentiation of cos. The differentiation of cos is minus sign. So both minus signs cancel, and there we still have that minus sign left, which we had earlier. So ये आ गया. So the first part derivative लिया तो sine of this, second part का लिया तो ये. Now this induced EMF must be 0 for all time instants. It is 0 for all time instants. तो इसको 0 put कर देंगे. Therefore we get that sine of this is equal to sine of this. अब अगर दो साइन फंक्शंस हमेशा बराबर हैं तो उनके अंदर का जो ये साइन के ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है, या तो वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाए तो फिर साइन फंक्शन हमेशा बराबर होंगे, बट साइन फंक्शन जो होता है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है. तो अगर जो हम साइन के अंदर डाल रहे हैं, अगर उसमें हम 2 पाई ऐड कर दें या 4 पाई ऐड कर दें, बेसिकली एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई ऐड कर दें, तो भी आंसर सेम ही आता है. तो बेसिकली अगर दो साइन फंक्शन सेम है फॉर ऑल टाइम इंस्टेंट्स, तो ऐसा हो सकता है कि जो अंदर साइन के अंदर तुमने डाला वो दोनों जगह सेम था, या फिर दोनों में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई का डिफरेंस था. सो इसका मतलब दिस पार्ट मस्ट बी इक्वल टू दिस पार्ट प्लस, सो यहाँ पे हाईलाइटर से बता देता हूँ. सो दिस थिंग, तो मैंने यहाँ लिखा है बेसिकली दिस थिंग इज हियर इज इक्वल टू दिस थिंग प्लस सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई. तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई ऐड करने से भी आंसर हमेशा सेम आता है, बिकॉज साइन फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन वेयर एन इज अ इंटीजर. राइट, सो यहाँ से सब कुछ कैंसिल होकर आ जाएगा कि L मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई बाई k. So this is how we solve it. I hope you could solve this question on your own, and even if you were not able to do it, I hope you learned from the solution and you will try it on your own again, because you will learn the best when you try it on your own. And thanks for watching.